गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडिया इजिप्ट रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म किया है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो हैं वो चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे पर जनवरी 2023 में। तो आपको पता है इंडिया और इजिप्ट जो है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं। अशोका की जो एडिक्ट थे उसमें भी बात की गई है कि रिलेशंस जो हैं इजिप्ट के साथ, जिसको हम मेसोपोटामिया कहते हैं, कहते थे, तो टोलेमी टू के टाइम पर वो एस्टेब्लिश हुए थे। और प्रेसिडेंट नासिर और प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो हैं वो भी को क्लोज फ्रेंड थे, जिन्होंने जो है नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। और फ्रेंडशिप ट्रीटी भी दोनों की कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई 1955 में। और इवन इस साल भी G20 की जो समिट हमारी प्रेसिडेंसी आ रही है इंडिया के पास, तो इंडिया ने 2022-23 के लिए इजिप्ट को गेस्ट कंट्री के लिए जो है वो इन्वाइट किया है। इंडिया और इजिप्ट का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 1978 से चल रहा है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है इजिप्ट के लिए। और आपस में एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है। अब इंडिया जो है एक तरह से हेल्पफुल बनकर आया इंडिया इजिप्ट के सामने, जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और शॉर्टेज ऑफ वीट हुई वर्ल्ड में। तो इंडिया को जो है वो एक्रेडिटेड कंट्रीज़ में इंक्लूड किया गया, जिसमें जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स जो इजिप्ट ने लगाए हुए थे पहले इंडियन वीट पर, उसको हटाया और इंडियन वीट जो है वहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट किया गया। तो हमारी डिफेंस भी जो है रिलेशंस वो भी बहुत अच्छे हैं। मल्टीलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज की जाती है दोनों के बीच में। एयरफोर्स भी जो है डेजर्ट वॉरियर नामक टैक्टिकल एयर एक्सरसाइज करती है। स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो साइक्लोन 1 एक्सरसाइज करते हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम जो हैं हम उनको बेचने को जो है वो इस पर बात चल रही है, डील चल रही है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स, इन सब के ऊपर जो है वो डील पर बात चल रही है। ठीक है। सो इंडियन कम्युनिटी भी वहाँ पर जो है वो लोकेटेड है। 3200 के आसपास जो है इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर लोकेटेड है। तो हमारे आपस में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लू बगिंग। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बहुत से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जहाँ पर ब्लूटूथ का यूज़ करके जो हैकर्स जो हैं वो फ़ोन का जो है एक्सेस ले लेते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके अगर ब्लूटूथ ऑन रहता है, या आपके इवन वायरलेस ईयरप्लग्स का भी ब्लूटूथ ऑन रहता है, तो उसका यूज़ करते हुए जो हैकर्स हैं वो आपकी कॉन्वर्सेशंस को सुन सकते हैं, आपके डिवाइस के मैसेजेस को रीड कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स को मॉडिफाई या फिर स्टील कर सकते हैं। तो ये ब्लू बगिंग एक तरह से ब्लूटूथ का यूज़ करते हुए हैकिंग की जाती है। और पहले तो सिर्फ लैपटॉप्स के लिए थ्रेट होता था, बट अब धीरे धीरे जो है इसको मोबाइल के लिए भी थ्रेट बना दिया गया है। और इसमें जब भी आपका ब्लूटूथ डिस्कवरेबल मोड पे है तो आप जो है वल्नरेबल हो। इससे आपके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है आपके ब्लूटूथ ऑन होने की वजह से, और जो है आपका मोबाइल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हो कि आप अपने ब्लूटूथ को ऑफ रखो जितना हो सकता है। कोई भी पेयर्ड डिवाइस है, अगर ब्लूटूथ डिवाइस जो आपको लग रहा है कि जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप उसको बंद कर सकते हो। अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन पर जो है वो अपडेट रख सकते हो, और वीपीएन को एक एडिशनल सिक्योरिटी मेजर की तरह यूज़ कर सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन साइंटिस्ट ने रिसेंटली इंटरनेशनल अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन जो है अलायंस जीता है, और ये मड्रिड बेस्ड BBVA फाउंडेशन ने जो है ये अवार्ड दिया है ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के कुछ साइंटिस्ट को, जो इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक है। सो अभी ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम क्या है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है, 2013 में बनाया गया था बिश्केक डिक्लेरेशन से। और ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स जो हैं 12 कंट्रीज़ ऑफ एशिया जहाँ पर स्नो लेपर्ड मिलता है, उन्होंने मिलकर इस अलायंस को बनाया। और जो किर्गिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, वो इसको होस्ट करती है, इसके सेक्रेटरीट को, और वही जो है वो इसको मैनेज भी कर रही है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फुजीवारा इफेक्ट। जियोग्राफी के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, इवन इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मीटरोलॉजिस्ट जो है उन्होंने जब टाइफून हिनामोर आया था, तो अब उसको जो है एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बना लिया है कि फुजीवाड़ा इफेक्ट ऐसा ही होता है। तो फुजीवाड़ा इफेक्ट होता है कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि जब भी दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स या साइक्लोन्स भी कह सकते हैं, जब वो एक ही टाइम पर लगभग 900 माइल्स या फिर 1400 किलोमीटर के आसपास के जो है डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनमें जो इंटरेक्शन भी हो सकता है उसको हम फुजीवाड़ा इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपस में या तो वो बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे, या फिर एक जो है साइक्लोन का जो है
रिस्पॉन्स दूसरे साइक्लोन की तरफ जो है वो पार्शल जो है वो चेंज होगा। तो चल ऐसे 5 तरह के वेज़ होते हैं जिसमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहले में तो क्या होता है कि जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है स्टॉर्म्स की वो एक दूसरे की तरफ हो जाती है या फिर चेंज हो जाती है। दूसरा होता है पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट, मतलब जो स्मॉल स्टॉर्म है वो या तो ख़त्म हो जाती है और या फिर कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट, मतलब बिल्कुल ही कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है वो स्मॉलर स्टॉर्म। पार्शियल मर्जर में क्या होता है, स्मॉल स्टॉर्म जो है वो जो है मर्ज होने लगती है बिगर वन के साथ। और कंप्लीट मर्जर में क्या होता है, दोनों स्टॉर्म्स ही जो है वो आपस में मिल जाती हैं और एक ही बड़ी जो है स्टॉर्म बन जाती है। तो फुजीवाड़ा इफेक्ट जो है, एक जापानीज मेट्रोलॉजिस्ट हैं साकुहे फुजीवाड़ा, उन्होंने जो है 1921 में उसको जो है पब्लिश करके समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो आपके इन्वायरमेंट और आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया स्टेप्स ले रहा है ताकि डेवलपमेंट कर सके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की, जो कि 300 मेगावाट कैपेसिटी के हैं। तो ये ऐसा मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया है रिसेंटली। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनकी लगभग के पावर कैपेसिटी लगभग 300 मेगावाट पर यूनिट होती है। और ये सिर्फ 1/3 ऑफ जो है टोटल ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पावर रिएक्टर्स की जनरेशन कर सकते हैं। स्मॉल जो होते हैं वो बिल्कुल ही छोटे होते हैं, मतलब उनके फ्रैक्शन ऑफ साइज ऑफ कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं। मॉड्यूलर जो होते हैं वो फैक्ट्री असेंबल किए जा सकते हैं उनको, अनलाइक जो आपके ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं। मॉड्यूलर जो है आपके रिएक्टर्स को आप जो है फैक्ट्री में भी असेंबल करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली हम अपने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इन रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये 300 मेगावाट के हैं तो इनकी डिज़ाइन बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इनको कम स्मॉलर फुटप्रिंट होता है इनका। इनको ऑन लोकेशन पे जो है बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इनको जो है आप क्योंकि ये बहुत मोबाइल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इनको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो इसको फैक्ट्री में भी बनाया जा सकता है और जाकर कहीं पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम न्यूक्लियर पावर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। डिसएडवांटेज ये है कि ऑफ कोर्स अभी तक ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी तक डेवलपमेंट फेज़ में ही है ये। जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की करना बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा, अदरवाइज़ ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेंगे। लाइसेंसिंग प्रोसेस जो होता है किसी भी कमर्शियल रिएक्टर का, वो बहुत ही कम्बरसम होता है, बहुत ही लेंथी होता है। तो आई डोंट नो कि कब इसका जो है, हम कह नहीं सकते कि कब जाकर ये स्केलेबल होंगे और कब जाकर ये बेनिफिट देना शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक आरडीआई क्वेरी में रिवील किया गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसमें जो है जितना भी लोन दिया गया उसमें सिर्फ 3.38% ही जो है वो एनपीए हुआ है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपको पता ही होगा ना कि 90 डेज़ तक अगर वो लोन की ना तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट आती है तो हम उसको एनपीए मानते हैं। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, अगर अगर हम बैंक्स के देखें मुद्रा लोन्स पे, तो वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो जितना, जबकि हम एक्सपेक्ट ये क्या कर रहे थे कि जो एक छोटे लोन्स होते हैं या छोटे व्यापारी होते हैं तो बहुत डिफ़ॉल्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा जो है जो शिशु लोन्स हैं उसमें सबसे कम देखने को मिला है हमें, जो मतलब 50,000 तक के लोन है उसमें सबसे कम एनपीए देखने को मिला है, 2.25% ही एनपीए हुआ है। जो हाईएस्ट देखने को मिला है वो किशोर लोन्स, जो आपके मिडल रेंज के लोन्स हैं 50,000 से 5 लाख के, उसमें सबसे ज़्यादा 4.49% देखने को मिला है एनपीए। और जो तरुण लोन्स हैं जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, उसमें जो है लगभग 2.29% जो है वो एनपीए हुआ है। तो ये स्कीम क्या है, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्कीम निकाली थी 2015 में, ताकि जो अनबैंक्ड जो है सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, खासकर जो भी कोई इंडियन सिटीजन जो नॉन फार्म सेक्टर में इनकम जनरेट करने की एक्टिविटीज़ करना चाहता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेसिंग हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस हो, उसके लिए उसको लोन मिल सकता है। तो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक, इवन फॉरेन बैंक या प्राइवेट बैंक से भी आपको ये लोन मिल सकता है अप टू 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरी के लोन है, शिशु, किशोर और तरुण। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईमा कैथल। तो ये आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिसेंटली अभी मणिपुर के ईमा कैथल, या फिर जिसको ईमा मार्केट कह सकते हैं, वहाँ पर गए थे इम्फाल में। तो उन्होंने जो है कहा है कि ये ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नारी शक्ति है। तो ईमा मार्केट है क्या, मदर्स मार्केट इसको कहते हैं, एक ऑल वीमेन मार्केट है। ये लार्जेस्ट सच शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है एशिया का। यहाँ पर लगभग 3,000 ईमा, या फिर जिनको मदर कह सकते हैं, वो काम करती हैं। यहाँ पर मेल वेंडर्स को आना मना है, कोई शॉपकीपर भी नहीं हो सकता यहाँ पर मेल। तो उनको एक लॉ बनाकर मणिपुर म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 2004, अगर वहाँ पर कोई भी मेल वेंडर अगर जो है वो पाया जाता है तो उसको जो है वो लीगल एक्शन हो सकता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत सेंचुरीज ओल्ड ये एक मार्केट है
और इसमें जो मेटी के टाइम पर मेटी मैन जो होते थे उनको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती थी या अदर सिविलियन प्रोजेक्ट्स में जाना पड़ता था, तो वो घर से ज़्यादा दूर रहते थे। तो इसलिए विमेन जो है उन्होंने अपने आप को खुद ही मैनेज करना शुरू किया और उन्होंने इस मार्केट को शुरू किया, मार्केट सिस्टम को, जिसको हम ईमा कैथल कहते हैं। तो ये इवन ब्रिटिश टाइम तक भी कंटिन्यू रहा, उसके बाद भी जो है ये अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is India-Egypt relations. So the first topic is this topic is important for your international relations. So as per the Ministry of External Affairs, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi will be the chief guest at the Republic Day celebrations of India in January 2023. So India and Egypt, they are two of the world's oldest civilizations. So you know that Ashoka's edict talks about relations between Mauryan Empire and Mesopotamian Empire under Ptolemy II. Even during after independence, President Nasser and Prime Minister Nehru, they were close friends. They even were the founding members of non-aligned movement. They also signed the Friendship Treaty in 1955. So kind of this is the 75th anniversary of diplomatic relations between India and Egypt. Egypt has also been invited as the guest country during India's presidency of G20 in 2022 and 2023. The bilateral trade agreement, which was signed in 1978, has been beneficial for both of us. India has become third largest export market for Egypt. When there was wheat crisis, the Egyptian government decided to remove India out of the non-tariff barrier countries, and we were put into the accredited countries, and that's why we were able to export wheat to Egypt at the time of their need. So defense relations is also burgeoning, and multilateral training exercises are conducted between the two countries. Even the air forces are conducting joint exercises. Special forces are also planning Cyclone One exercise between Egypt and India, and we are also planning to export some arms to them, apart from Akash missile systems, some aircrafts. Helicopters and subsonic cruise missiles, etc. They are also being explored, and probably LCA Tejas is also being explored by Egyptian government and for future procurement. So of course we also have people to people contact with each other. About 3200 Indian community people are living in Egypt, and mostly in around Cairo, which is the capital of Egypt. Okay, so the next topic is blue bugging. This topic is important for your security section. So several smartphone manufacturers have confirmed that they have found this blue bugging, which is a mode of hacking your phone using your Bluetooth. You know, generally people keep their Bluetooth on, and using a malware, these devices are targeted, and once this malware is installed using your Bluetooth, then the hackers would be able to record your conversations, even listen to your calls, read and send your messages, and even steal or modify your contacts. So basically it's a form of hacking which is using the device Bluetooth connection to gain access to the device, and that's why it's called blue bugging. Okay, and initially it was just a threat for laptops with Bluetooth capability, but now it has expanded, and uh, now even the phones have become vulnerable. So basically, if your Bluetooth is in discoverable mode, any hacker can install malware and can gain unauthorized access to your device. So what you can do is you can turn off your Bluetooth when you're not using it, and disconnect any paired Bluetooth device when it is not being used. Okay, so the next topic is global snow leopard ecosystem protection program. This topic is important for our environment section. So Indian scientists have recently received international award on behalf of Snow Leopard Conservation Alliance. So you know that this award has been given by Madrid based BBVA Foundation. And what is global snow leopard ecosystem protection program? It's a first of its kind intergovernmental alliance between the 12 countries of Asia which are having significant snow leopard population. Its secretariat is based in Bishkek, that is in Kyrgyzstan, and even the Ministry of Natural Resources of Kyrgyzstan is managing this secretariat. So of course it was created in 2013 with the Bishkek Declaration.
So the next topic is Fujiwara effect. We have already discussed about it several times, and it is very important for your exam next year. So this topic is important for your geography and environment section both. So meteorologists have been mesmerized by the typhoon Hinamron because it has become the textbook's example of the Fujiwara effect. So Fujiwara effect is basically any interaction between tropical storms which are formed around the same time in the same ocean region, uh, in about 900 miles distance, and about that is about 1400 kilometers, of course. And this interaction between these two tropical storms can lead to changes in the track and intensity of these storms, uh, even to the extent that these systems could merge to form one big system. So there are five different ways in which Fujiwara effect can take place. Of course, first is the that it can it can affect the motion of the storms, and it is the most common case. The second is, of course, partial straining out, which means the smaller storm is lost to the atmosphere. Third is complete straining out, which means the smaller storm is completely lost to the atmosphere. Fourth type is partial merger, in which the smaller storm merges into the bigger one, and the fifth one is, of course, complete merger, in which two storms of similar strength merge together with each other. Okay, so Fujiwara effect was identified by Sakuhei Fujiwara, who was a Japanese meteorologist in 1921. So the next topic is small modular reactors. This topic is important for your science and tech section, and also for your economy section, because it is going to be a part of your energy security. So Union Minister of State for Science and Technology has said that India is taking steps for the development of small modular reactors with up to 300 megawatt capacity. So these will be advanced nuclear reactors, and they will have a power capacity of up to 300 megawatts per unit, which is about one third of the generation capacity of traditional nuclear power reactors. So there are small modular and small and modular reactors. Small means, of course, a fraction of size of the conventional nuclear reactor. Modular, of course, here means these can be factory assembled and transported. Also, they are mobile, and because they are flexible, they are small in size. There is flexibility in design, and they also require smaller footprint to produce, as compared to the traditional nuclear reactors. Because of being mobile and agile, these can also be factory built. You do not need to go in at the particular location to produce nuclear power plants. So because of their small size and mobility, you can expand and scale up the production, and that's why you can decarbonize your industrialization, because it is a reliable and continuous source of supply of power. So what are the disadvantages? Of course, there is not yet any significant development in this regard. Even the four nuclear reactors, so these small modular reactors which are being produced in certain countries like Argentina, China, and Russia, they have not yet been developed fully. And there are also issues of scaling. Until these small modular reactors scale up into production, they would not be economically beneficial. Also, because the entire process of licensing in terms of nuclear reactors is cumbersome. That's why this small modular reactors process of licensing would also be lengthy and costly. So the next topic is Pradhan Mantri Mudra Yojana. This topic is important for your economy section. So an RTI inquiry has revealed that bad loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana for all banks will be has showcased that it is just 3.38% of the loans of under Pradhan Mantri Mudra Yojana which have gone bad, or which have gone NPA. Despite the accusations earlier under the scheme that there would be major NPAs through this particular scheme, so it is basically lower than the average NPAs of the entire economy as a whole. If we see that, the good thing is that NPAs for the smaller loans, the Shishu loans, are at the lowest, of course, at 2.25%. The highest is, of course, part of the Kishore loans, which is about 50,000 to 5 lakh rupee loans. And the second one, of course, is the Tarun loans, which is between 5 lakh to 10 lakh.
Okay, so the scheme was launched by the Ministry of Finance in 2015 to bank the unbanked banked sector, basically those Indian citizens who are having a business plan and they are planning for a non-farm sector, manufacturing, processing, trading, or servicing, and these loans can be availed from all banks, including foreign and private banks. Okay. So the next topic is EMA Kethel. This topic is important for your social issues. So External Affairs Minister has recently visited EMA Kethel, that is in Imphal, in Manipur, and called this market as a great example of Nari Shakti. So this is called Mother's Market, and it is an all-women market, and it is the largest such complex shopping complex in Asia. About 3,000 mothers are working here, and even the male vendors and shopkeepers are barred to function here under even through a legal act, or legally they are barred from entering here. So this is a centuries old tradition in Manipur, and they, you know that under this system, when meaty men, they have to compulsorily go for military service and other civilian projects. They basically stayed away from home, and it led the women to take charge and manage their household chores on their own, and that's why they started this Ima Kethel, that is the women's market, and it is continuing since centuries. And it even the British tried to stop this market, but they failed in dissuading them. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.